को स्वागत कर रहा है मेरे यूट्यूब चैनल से। और आप लोगों को हम आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स इंडिकेट्स स्नैप 3 डेज लूजिंग स्ट्रिक। जो स्टॉक मार्केट का क्रैश के बारे में आप लोगों को साथ बात करेंगे अभी। और आप लोगों ने देखा जो स्टॉक मार्केट हाईलाइट इंडिसेस स्नैप 3 डे लूजिंग स्ट्रेच निफ्टी 50 नियर 25,600। और आप लोगों ने देखा है जो सेंसेक्स का बात कर रहे हैं अभी। सेंसेक्स टुडे स्टॉक मार्केट हाईलाइट द सेंसेक्स रोज 319 पॉइंट्स टू क्लोज एट 83,500 83,535 while the Nifty 50 gained 82.2 in at 25,574. The Nifty 50 Bank Index ended up 61.2, 57,937, though banks relatively underperformed, closing flat despite ending in the green. The broader market saw strength with the Nifty Midcap Index climbing to 81.2, 60,124. आप लोगों ने देखा है शेयर मार्केट का जो क्रैश हो रहा है, आप लोगों ने देखा सेंसेक्स टुडे। और आईटी स्टॉक लीड द आप लोगों ने देखा जो स्टॉक मार्केट हाईलाइट द मार्केट स्नैप ए 3 डे लॉसिंग स्ट्रीक ऑन मंडे लिफ्ट largely by IT stock as benchmark indeed higher IT stock lead the recovery, which Infosys and HCL Technologies emerging as the top contributor to Nifty 50 gain. HCL Engineering hit a record high after posting a strong second quarter performance and securing a fresh order, rallying 20%. Meanwhile, Indian Metal extend it is the winning streak, soaring another 11% for the day. और आप लोगों ने देखा जो स्टॉक मार्केट का जो डिक्रीज हो रहा है एमंग अदर मेजर मूवर ड्रीमफॉक्स सर्विस सर्ज 10% आफ्टर announcing and the acquisition in the hospitality segment, while Nika, Nilaco, Anu, Minda and Torrent Pharma gain between 5% and 10%. On strong in earning, defense stock also remain in focus with Hindustan Aeronautics and Bharat Dynamics Ltd up 4 to 5% on healthy volume. आप लोगों ने देखा जो शेयर मार्केट के बारे में। और गोल्ड फाइनेंशियल रियली एज प्राइस रोज अगेन विथ मुथूट फाइनेंस गेनिंग आफ्टर 3%. Bajaj Finance indeed 2% higher ahead of its quarterly result. On the flip side, Train was the top Nifty 50 loser, slipping 70% after posting mute Q2 result. Amber Enterprise fell 3% as the company struggled to hold any recovery following its earning announcement, while NCC declined 4% after withdrawing its FY 2026 guidance.